Hello, once again, good morning, good afternoon, right? Another, we are starting another part today. Hi, my name is Nishant. आज हम लोग we will be continuing regarding the parts of speech, right? पहले के classes में हम लोग ने different parts of speech ऐसे देखे थे, nouns and pronouns के बारे में हमने बात कर लिया था. We had completed regarding the nouns and pronouns in the last class. Today, we will be learning regarding another topic in parts of speech known as adjectives. Right. बहुत simple सा topic है. It is very simple. Before that, I would just ask few things to you. Are you practicing those sentences? Please practice those sentences whatever आता है. The examples, you can take those examples. वही जो examples हैं जो मैंने screen पे दिखाए थे in the last class. उसी में you can just change the subjects. वहाँ पे जो subject है उनके place पे name change करके या फिर कुछ और चीज़ डाल करके you can try. फ्रेम करिएगा, ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस दैट इन दैट वे यू विल बी एबल टू नो व्हाट कैसे आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे. क्या आगे आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब विल कम, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड कैन यू पुट इन द नेक्स्ट वन. बस ट्राई टू पुट प्ले विद दोज वर्ड्स, इट विल बिकम वेरी इजी. ये करना बहुत ज़रूरी रहेगा. दैट इज़ हाउ यू लर्न लैंग्वेज. दैट इज़ ओनली हाउ यू लर्न हाउ टू राइट ऑल्सो एंड दैट द सेम वे. राइट. सो जल्दी से शुरू करते हैं regarding today's topic, adjectives. Yeah, just hold on for a second. I will just share the screen and yeah, present it. Okay, parts of speech, sixth lecture. मेरा नाम निशांत है. I hope you're all doing fine. Let's जल्दी से we'll start with this. Okay, before this, in the last class when we were discussing regarding pronouns, कुछ questions थे there I had to tell the answers regarding that. I hope you have done that homework there. You just needed to identify the pronouns in that. Although it is very simple there. अगर आप sentence पढ़ेंगे उसमें आराम से समझ में आ जाएगा कि which is a pronoun and which is not that. See, you can take those examples. वही sentences आप समझ करके you can take that and frame your own sentences. Right? बहुत आसान होता है. It's not that difficult. Okay, चलिए let's quickly do that first. These were the few sentences what I had given in the last class. ये सब कुछ sentence थे जो last class में दिया गया था. Right? So you have to identify this. I hope you have done this. Okay, if you have not done it, you can just pause the screen right now and just see the sentences. Read those sentences. आप आराम से समझ जाएंगे. It's very easy. Right? And in the last pronouns class के बारे में भी मैंने बहुत सारे different pronouns के बारे में बात किया था. Right? बहुत सारे pronouns थे. So you have to know each one of them, especially the starting four, right? Starting के जो four रहते हैं, personal pronoun, possessive pronoun, interrogatives, and the another one what I call demonstrative pronouns. ये चार main रहते हैं. After that जो आते हैं, that is little difficult also sometimes to understand. Reflexive, emphatic, right? Interrogatives, and the last one relative. ये थोड़े से it can be little difficult. क्योंकि वो रिलेटिव स्पेशली वो सेंटेंस के बाद जो फ्रेम करना रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट. ऑल्दो इट इज़ ईजी. राइट, प्लीज डू ट्राई दिस. आप लोग पॉज करके एक बार देख सकते हैं रिगार्डिंग देम एंड या ओके. इफ यू हैव पॉज्ड इट आई विल टेल द आंसर्स फॉर देम. ओके या ओके. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस हियर, शी इज वाचिंग टेलीविजन. क्या प्रोनाउन है हियर? इट्स इजी. शी. What kind of pronoun is that? Personal pronoun there. Right. Now the next one. They are going to watch a film today. Right. If you have guessed or if you have told the answer they, it's absolutely right. क्या हो जाता है they? Yes, exactly. If you have told that personal pronoun, that's also right. Now the next one here. I am studying grammar. Abhi up, you are also studying grammar right now. You are. Right. You is also a pronoun there. In this sentence, yes, you're right. If you said I, that is also the pronoun there. Do you know the answer? Directly. Yeah. You. Do you know the answer? You know the answer. You is that pronoun there. Right. ये सब पूरे personal pronoun के ही हैं. Right. Now the next one. Observe the sentence. You yourself must find a solution to this problem. आपको खुद ही को ये problem का solution ढूंढना पड़ेगा. You should find the solution for this problem. Now, you yourself, right? Two words here. You. It's a pronoun there.
योरसेल्फ, ये याद रखिएगा। सीधा नाउन द प्रोनाउन के बाद या नाउन के बाद अगर आप ये लिख रहे हैं, व्हाट इज दैट? Emphatic or reflexive? Yes, it is emphatic. Reflexive will be always come after the verb. यहाँ पे verb के पहले आ रहा है, right? Find यहाँ पे एक verb हो जा रही है, yourself के पहले वो pronoun आ रहा है. That's why this is an emphatic pronoun. EP लिख दे रहा हूँ in the short form, emphatic pronoun. Yeah. Next one here. Neither of us can go to the party. Us, and there is one more here. Yes, exactly. Neither and us. Neither यहाँ पे एक हो जाता है for distributive, right? And us यहाँ पे it's for personal there, right? Correct. Now the next one. God has been kind to me. Has been kind to me. Me, exactly, me. Me is the pronoun over there, right? The guests enjoyed themselves. Now again, themselves, which is coming, which is an reflexive pronoun, और वो verb के बाद में आ रहा है. Just observe, enjoyed, ठीक है, the guest enjoyed themselves, वे खुद ही enjoy कर लिया अपने बीच में, right? Themselves, जो verb के बाद में आ रहा है, that is the reflexive pronoun, ठीक है, RP. I'll just write a reflexive pronoun RP that, ठीक है. This is the architect who designed my house. Architect, okay, who designed my house. Who? This one is one important. ये relative pronoun हो जाता है, right? This is a relative pronoun. Okay, यहाँ पे और एक word आ रहा है. There are two more words what you can find. If you have found it, very good, right? This and my. This demonstrative, ये demonstrative हो जा रहा है. And my house, याद करते हैं possessive pronouns. Possessive PP, possessive pronouns. I'm just writing in the short form here. Possessive pronouns here. If I could not open the email which you sent me. मैं वो ईमेल नहीं खोल पाया जो आपने मुझे भेजा. That's in Hindi, right? I, you, with me, these all, right? यहाँ पे और एक word है which is known as relative pronoun here, which it's talking about the email. ठीक है, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है. जो विच है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि दैट इज टेलिंग डिफाइनिंग अबाउट द नाउन. ठीक है, ईमेल जो मैं नहीं खोल, जो तुमने भेजा, राइट, विच यू हैव सेंट. ठीक है, तो विच जो हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का. आई होप आप लोगों को ये समझ में आए रिगार्डिंग ऑल द प्रोनाउंस हियर. ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे and these were you can just take these sentences. ये sentences को आप change करिएगा there. Try to change the object. Like यहाँ पे architect लिखा हुआ है, you change that to something else. Person or anybody, any other person. This is the person who designed my house. This is my this, or else you can change it this way also. My father is the one who designed my house. ऐसे भी आप लिख सकते हैं. Change the object. वहाँ पे object change, subject को change करिएगा. कुछ भी लिख के ट्राई करिएगा. I know there might be some sentences which might go wrong, but that's fine. You will be able to know, अरे ये sentence गलत है, right? Fine. You just practice according to that. ऐसे आप sentence use those words and frame some sentences. It will be great, right? चले आज का नया topic के बारे में. Let's do that. Adjectives here, right? I'll change the slide. चलिए, before starting with adjectives, ये एक छोटा सा passage है, a small passage here, ठीक है? We can read it together. Okay, ये वाला देखिएगा here. Lakshmi is a successful lawyer who is quite wealthy. She lives in a luxurious apartment with many priceless pieces of sculpture in her modern drawing room. Everyone envies her stylish lifestyle. यहाँ पे जो भी words अगर आप देखेंगे, okay, there might be one word envies, ठीक है? This is one word which might be difficult, ठीक है? But सब लोग उसकी तरह सोचते हैं, उसकी तरह रहने का सोचते हैं. वो what you can get from this sentence. Okay, now just observe the other words here. Successful, wealthy, luxurious, modern, stylish. ये सब adjectives हो जाते हैं जो वो noun को describe कर रहा है. तो adjectives क्या होते हैं? Adjectives are the words which describe the noun in a better way. Noun, देखिए जैसे यहाँ पे देखिएगा, lawyer, कैसी lawyer है लक्ष्मी? What kind of lawyer she is? What type is she? Successful? Is she
good or bad, ये सब हो जाता है adjectives. Who is quite wealthy, she has money, right? Wealthy, पैसे वाली है, what we can say. She has money there, right? She lives in luxurious apartment, बहुत महंगा अपार्टमेंट, बहुत luxurious apartment. ठीक है, luxurious apartment ये हो जा रहा है. It is defining apartment के बारे में कह रहा है. ठीक है, with many priceless pieces of sculpture, right? Priceless pieces of sculpture, ठीक है, वो बहुत महंगी चीज़ें जो बोलते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत महंगी चीज़ें हैं, what you can get in a modern drawing room. मॉडर्न, ठीक है, कैसा ड्राइंग रूम है, मॉडर्न रूम है, पुराना नहीं है, बहुत नया है, ठीक है, व्हाट यू कैन कॉल हियर. एवरीवन एनवीज हैव स्टाइलिश लाइफस्टाइल, कैसी लाइफस्टाइल है, बहुत स्टाइलिश लाइफस्टाइल जीती है. ये हो जाता है, दीज जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स हो जा रहे हैं, इन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, चलिए आप आई थिंक थोड़ा little clarity you might have got regarding these words. What are adjectives? आगे चलते हैं, you will know there are different types of adjectives. ठीक है, adjectives में different types हो जाता है. थोड़े sentences frame करेंगे, थोड़े ये के बारे में देखेंगे, आप आराम से समझेंगे. उसके बाद मैं बताऊंगा कि word कैसे, एक noun को आप कैसे adjective में लिखा जा सकता है. That also we'll have to see. जैसे यहाँ पे भी you will have seen, right? ये जो wealth, wealthy, ये कैसे आया, कैसे आप समझे, ठीक है. हाउ डिड दिस वर्ड चेंज टू वेल्थी, ठीक है. सक्सेस, सक्सेसफुल से कैसे चेंज हुआ, इट्स वेरी इजी, विल डू दैट इन द कमिंग स्लाइड. ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. ओके, हाँ, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है. वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. सिंपल सी बात है, ठीक है. जो वर्ड्स हम लोग डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन के लिए, वो हो जाता है एडजेक्टिव. और थोड़ा शब्द ऐसे जोड़ देते हैं बेसिकली उसको, और डिस्क्राइब करने के लिए जो हम लोग बता देते हैं, वो पूरे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोहन वोर अ ब्यूटीफुल हैट, बहुत सुंदर हैट पहना था रोहन, ठीक है, लाइक दैट. फरी डॉग्स लाइक टू स्पेंड टाइम इन समर, बाल वाले कुत्ते जो होते हैं, फरी डॉग्स, बहुत हेयरी डॉग्स जो होते हैं, उन लोग को टाइम बहुत अच्छा लगता है स्पेंड करना समर में, गर्म रहता है इसीलिए, राइट. माई बैग हैज 16 बुक्स इन इट, मेरे बैग में 16 बुक्स हैं, राइट. डिस्क्राइब कर रहा है वहाँ पे वो नाउन को, ठीक है. एवरी वर्ड इफ यू सी, उसके पहले वो डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या है, कितने किताब हैं, 16 बुक्स हैं. इंडियन टी इज फेमस, इंडियन टी इज फेमस, कैसी टी, कैसा टी, इंडिया का टी बहुत फेमस है. इट इज अ शाइनी कार, कैसा गाड़ी है, चमकता हुआ गाड़ी है, शाइनी कार है, राइट. ये सब हो जाता है एडजेक्टिव्स. बहुत सिंपल से चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड्स जानना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वर्ड्स हियर. नाउ देयर आर काउंटलेस वर्ड्स, बहुत सारे शब्द होते हैं एडजेक्टिव्स को डिफाइन कर, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत अनगिनत वर्ड होता है. बहुत इंपॉर्टेंट होगा एवरीवन टू हैव अ डिक्शनरी, बहुत ज़रूरी होगा. इट इज़ नेसेसरी इवन टू, यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी और ऑल्सो यू कैन यूज़ द इंटरनेट डिक्शनरी विच इज़ अवेलेबल, राइट. आप एक साइड में यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोज डिक्शनरीज, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, गूगल का डिक्शनरी है, व्हाट यू हैव, राइट. बहुत सारे ऐसे डिक्शनरीज हैं, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे देखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन, अगर आप ऑनलाइन का डिक्शनरी यूज़ करते हैं, यू कैन इवन फाइंड द प्रोनाउंसिएशन दैट, राइट. कुछ कुछ वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं जो हम लोग बोल नहीं पाते हैं. लिसनिंग टू दोज वर्ड्स, वहाँ पे वो प्रोनाउंस का एक माइक, एक स्पीकर का छोटा सा सिंबल होता है. व्हेन यू क्लिक दैट यू कैन हियर दोज साउंड्स आल्सो, हाउ द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड. दैट इज आल्सो वन थिंग व्हाट यू कैन डू. बट वही मैं कह रहा हूँ, अगेन आई विल रिपीट इट, इट्स नेसेसरी टू हैव डिक्शनरी व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, बहुत ज़रूरी होता है, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो हो जाता है. बहुत प्रकार के रहेंगे एडजेक्टिव्स, राइट. यहाँ पे मैंने आपको कहा भी था इन द लास्ट बिफोर प्रोनाउंस के क्लास में मैं जब पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टेकिंग दैट क्लास, आई टोल्ड यू रिगार्डिंग सम प्रोनाउंस व्हिच आर सिमिलर टू द एडजेक्टिव्स आल्सो, राइट. सेम वर्ड्स हो जाते हैं, देयर आर जनरली द सेम वर्ड्स आल्सो. यू विल फाइंड इट हियर सिमिलर, but the sentence formation will be quite different. Let's continue with that. Let's move forward. Yeah. There are 6 types of adjectives. Adjective of quality, quantity, number,
adjective, demonstrative adjective, possessive adjective, interrogative adjective. Although यहाँ पे और थोड़े adjectives भी होते हैं, but these are the few basic ones what are there. Right? ये हम लोग के to speak every day and to know regarding most of the things ये काफ़ी होता है. राइट ओके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसा क्वालिटी है कैसा है वो चीज़ कौन है वो ठीक है टू नो दैट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैं आई विल नॉट टेल यू द एग्जांपल राइट नाउ बिकॉज इन द नेक्स्ट स्लाइड ओनली वी हैव सम एग्जांपल्स एंड विद द डेफिनेशन दैट definition is not important you need to understand according to the example of these sentences right the more sentences you read the more sentences you see that will only help you to frame your own sentences इसलिए मैं ट्राई करता हूँ टू for you to just read those examples again all the sentences all the exercises what we are doing here up you can just pause it in between try to change those words there okay even for the pronouns even for the nouns okay बस just try to change the words okay आगे पीछे करिएगा एक word को change करिएगा see what you can do there even I know I'm pretty sure sometimes we might go wrong but it's fine ओके चलिए वी आई विल नॉट डिस्कस मोर ऑफ द थिंग्स दैट कैसे कैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते तो हम लोग जान जाते हैं वी टेंड टू नो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस दैट वे चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड रिमेंबर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स possessive adjectives and interrogative adjectives if you remember these three are the same things ये सब सेम थे जो हम लोग प्रोनाउंस में डिस्कस किए थे इट्स द सेम थिंग व्हाट यू विल फाइंड इट ओवर हियर राइट सेम वही होंगे but it will be a little bit different while framing the sentence okay let's move forward adjective of quality right adjective of quality tells us about quality of a person or a thing ये क्वालिटी बताता है वो आदमी और थिंग सामान के बारे में ठीक है इट कैन बी एनीथिंग मैनी थिंग्स इट कैन बी शी इज़ अ सिंसियर वर्कर बहुत सिंसियर वर्कर है बहुत मेहनती वर्कर है शी इज़ अ हार्ड वर्किंग वर्कर ऑल्सो शी कैन यू कैन से शी इज़ सिंसियर स्टूडेंट ऐसे भी आप कह सकते हैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट है शी इज़ एन हॉनेस्ट वर्कर ऑल्सो यू कैन से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं फॉर क्वालिटी क्वालिटी बहुत कुछ होता है गुड वर्कर बैड वर्कर स्मार्ट वर्कर ऑल दीज कम्स अंडर द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग ओके थिंग के लिए भी आप कह सकते हैं दिस इज स्ट्रांगली बिल्ड ठीक है बहुत स्ट्रांगली बिल्ड है ऐसे यू कैन टेल राइट रिमेंबर दिस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा ऑलवेज रिमेंबर दिस वेन एवर यू आर राइटिंग एन एडजेक्टिव उसके बाद जनरली देयर इज अ नाउन ऑलवेज एक नाउन रहना बहुत जरूरी है देन ओनली इट विल बी एन एडजेक्टिव ठीक है और एल्स इफ यू आर जस्ट राइटिंग दैट सिंगुलर वर्ड ओवर देयर that cannot be an adjective right just we'll discuss that हम लोग देखेंगे उसके बारे में okay now I'll just read out these sentences okay she is a sincere worker he was brave he was a brave soldier the British Empire was vast ठीक है now here just remember this British ये एक proper noun हो जा रहा है it's a proper noun which begins with a capital letter but ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव्स की तरह कहा जाएगा क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर राइट एम्पायर इज ऑल्सो अ नाउन दैट ठीक है वही नाउन को ये डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं जैसे मैंने एक सेंटेंस इसके पहले बताया था आपको ठीक है इंडियन टी राइट इंडियन इज एन it's an proper noun what you can say right but to define tea from where it is to describe that ठीक है to tell the quality that one you can also use there Swiss chocolate ठीक है ऐसे हर कंट्री का अलग अलग चीज होता है विच इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट दे मेक फ्रॉम सो मेनी इयर्स राइट दैट्स वे लाइक फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में तो वी हैव मेनी थिंग्स ओवर हियर देयर इज गुड क्वालिटी ऑफ राइस विच इज फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ में जाएंगे देयर आर डिफरेंट थिंग्स राइट जैसे ईस्टर्न साइड यू फाइंड टी इन द साउथ यू कम बैक यू फाइंड राइस कॉफी एंड डिफरेंट प्लांटेशंस हियर दीज आर ओनली फाउंड इन इंडिया ये सब क्वालिटी के लिए बाद में बात करते हैं I hope you are able to understand regarding quality of adjectives of quality. Right? चलिए, let's move forward. Adjective of quantity. Now, यहाँ पे adjective of quantity indicates how much of a thing is meant. कितने चीज है वहाँ पे वो बात करने के लिए adjective of quality रहता है, quantity रहता है. In quantity, there is one thing what you have to remember is that here the number is not accurate. वो डेफिनेट नहीं होता है ये पूरा इनडेफिनेट होता है एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है जैसे एग्जांपल ये सेंटेंस ही पढ़ लीजिएगा
He did not eat any bread. He did not eat any bread. कुछ भी नहीं खाया. Any bread, कुछ anything, कुछ भी नहीं खाया. कुछ पता नहीं है. ठीक है. Now, I need some money. It can be 100 rupees. It can be 50. It can be 1000. Some money it is. Right. Anish has few pens. थोड़े pens हैं. Right. लेकिन कितने हैं हमें नहीं पता. ठीक है. ये सब हो जाता है adjective of quantity. How much of a thing? जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कितने हैं, then कितने, कितना जब आप पूछेंगे, then you will get to know how much. ठीक है. He did not eat any bread. How much bread did he eat? Any. कुछ भी नहीं खाया. Right. I need some money. How much money do you need? Some money. Yanish has few pens. How many pens does Yanish has? Few pens. This way. Okay. Now you can use different words here. बहुत सारे words आते हैं for adjective of quality. मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है. Some, enough, sufficient, few, little, plenty. ये सब हो जाता है. Few of those words what you can frame. आप लोग try करिएगा to frame some sentences using these words. Please do try this. ठीक है. I know plenty, little, up you might go wrong framing those sentences, but it's fine. Please do try. Like, I have sufficient money with me. Sufficient money with me. I have enough money with me. That also is fine. Okay. There are there is little rice left in the container. Thoda chawal baki hai. Okay. Now I have plenty of toys with me. Plenty toys with me. बहुत खिलौने हैं मेरे पास. That's what you can tell. So, but यहाँ पे I hope you are able to understand. ये पूरे definite नहीं होता है. Not definite. Right? ये पूरे definite नहीं होता है for adjective of quantity. For quality it will be different. ठीक है. Quality में जो था वो अलग था. वहाँ पे हमने एक चीज़ के बारे में कैसे होते हैं, क्या होता है वो जानना था. यहाँ पे ये है quantity के बारे में. Next one, what we'll go for is known as adjective of number. ये काफ़ी funny होता है and it is somewhat different also. Right? चलिए, let's move forward. Adjective of number. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. Adjective of number states how many person or thing are meant or in which order the person or thing stands. दो चीज़ है यहाँ पे. कितने लोग हैं वो एक हो जाता है. ठीक है. और कितने कैसे ऑर्डर में है वो भी आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है. यू कैन जस्ट रीड देम वंस. वहाँ पे मैं हाईलाइट करके भी रखा हूँ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है. वी विल गेट टू नो फ्रॉम दिस एंड आफ्टर दिस देयर इज वन मोर पॉइंट व्हिच विल आई हैव टू टेल यू हियर. ठीक है. दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बट या यू कैन जस्ट नो दैट विथ अ स्मॉल एफर्ट हियर. ओके. जैसे यहाँ देखिएगा. द बॉक्स कंटेन्स 5 पेन्स. कितने पेन हैं? हाउ मेनी पेन्स आर देयर? हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? 5 पेन्स. एक डेफिनेट नंबर आ रहा है यहाँ पे. राइट. इसके पहले वाला में जब हमने डिस्कस किया था क्वांटिटी में, वहाँ पे इट वाज नॉट डेफिनेट. नाउ हियर एवरीथिंग इज डेफिनेट. एक एग्जैक्ट नंबर. राइट. द बॉक्स कंटेन्स 5 पेन्स. 5 पेन है बॉक्स के अंदर. टुडे इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मैच. ठीक है. फर्स्ट डे ऑफ द मैच. ये एक ऑर्डर के बारे में बात किया जा रहा है. पहला दिन है. ऑर्डर. राइट. किस ऑर्डर में है? ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम वर रेडी टू ज्वाइन. सभी चिल्ड्रन, सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर क्लास चिल्ड्रन जो थे वो क्लास में जो थे वो क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी थे. या ऑल. ये सब हो जाता है फॉर एडजेक्टिव ऑफ नंबर. राइट. There are one small point what you need to know regarding adjective of number, that to understand different types of numbers what are that. Simple सा चीज़ है. It will be done in a minute here. Right. Let us just see at the next slide. देखिएगा. Adjectives that state the exact number of noun is called cardinals. ठीक है. Exact number जो बताता है वो cardinal numbers हो जाता है. ठीक है. जैसे 2 fish, 5 books, 8 pens. All numbers जो numbers हम लोग 1 2 3 4 बोलते हैं. Right. Those are known as cardinals. ठीक है. Now यहाँ पे देखिएगा. Here there should be one more word here. th should be given. Okay. Ordinals वो हो जाते हैं जो words जो order के बारे में बात कर, which tells about the order of things. Right. वो हो जाता है for ordinals. The 4th day. Right. The 4th day. Yeah. The 4th day or the first month. Anything that way. ठीक है. That is generally called as the ordinals. Right.
दिस इज क्वाइट नेसेसरी टू नो। ये कार्डिनल्स का हो जाता है एंड ऑर्डिनल्स का हो जाता है। प्लीज डू रिमेंबर दिस। नंबर्स का है, इट इज वेरी सिंपल टू नो, राइट? Cardinals is regarding the numbers, what exact number what we call, and ordinals are those जो order में हो जाता है, first day, fourth day, fifth day, sixth, or anything that way, first, second, first, even you can use even last, right? These all are ordinals. ये एक point है, ठीक है? ये सब पूरी definite ये हो जाता है। Now इसमें एक indefinite numerical हो जाता है, जैसे few, many and all those things, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी आ जाता है, एवरी ईच, ये भी आ जाता है। ऑल्दो दैट इज नॉट मच नेसेसरी रिक्वायर्ड राइट नाउ, उतना नेसेसरी नहीं है, बट कीप दैट इन माइंड। ओके, इनडेफिनेट वो हो जाता है फॉर मैनी एंड सम, जो सेम थे जो हमने डिस्कस किया था क्वांटिटी के लिए, ठीक है? सेम सिमिलर लाइक दैट वे, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स है, ओके, दैट ईच एंड एवरी, राइट? नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दीज आर फॉर सम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। Let's move forward, जो हो जाता है for demonstrative adjectives. Okay, now demonstrative adjectives are those adjectives जो आप pronouns में भी हमने डिस्कस किया था। It's the same thing what it is. This, these, this, that, these, those. आप लोग याद करते होंगे, this and that is for singular and these and those are for plural, right? This singular के लिए हो जाता है जो नज़दीक है, ठीक है? That singular के लिए हो जाता है जो दूर है, ठीक है? दीज हो जाता है नज़दीक के लिए, दोज हो जाता है दूर के लिए, राइट? प्लूरल्स के लिए हो जाता है। यही चीज़ हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सेंटेंस पढ़िएगा, रीड दीज टू सेंटेंसेस। दिस चाइल्ड हैज़ फॉलन इल, ये बच्चा बीमार हो गया है। दीज मैंगोज आर राइट, राइट? दिस एंड दीज, इसके बाद में देयर इज ऑलवेज अ नाउन, That's why it's forming an adjective. अभी अगर ये ऐसे लिखा रहता, this is my pen, this यहाँ पे that will be a pronoun there, ये pronoun हो जाएगा, but ये एक adjective नहीं होगा। हाँ, this can be an adjective, what we'll discuss after the next slide, but याद रखिएगा that it will only be an adjective if there is a noun, उसके just immediately एक noun है तो। If it is not there that way, then that will not be an adjective. Okay, I hope you have understood this. Demonstrative adjectives indicate which person or thing is meant to. Same thing, वहाँ पे हम लोग point out करने के लिए कह रहे थे, यहाँ पे भी you say the same thing to point out thing. Okay, this child, ये लड़का और ये बच्चा बीमार हो गया है। The mangoes are ripe, these mangoes are ripe. ये पूरे mangoes जो हैं, ठीक है, जो मेरे पास है नज़दीक में, वो ripe हैं, पके हुए हैं, ठीक है? That way. Okay, I hope you have understood regarding demonstrative adjectives here. बहुत simple है, ठीक है? Yeah. चलिए, let's move forward then. Okay, now possessive adjectives. यही बात था जो मैंने पिछले सेंटेंस में कहा था, my किसका है जानने के लिए, ठीक है? His सेंटेंस देखिएगा, his name is John. The dog is licking its paws, right? The students thank their teachers. Always remember possession over here. किसका नाम, किसका पैर, किसके टीचर, their teacher, its boss, his name, right? So these are possessive adjectives there. Okay, now this, ये सब वही सब है, possessive pronouns के ही words है. If you remember, my, your, his, her, its, ours, theirs, there are the same words, but the sentence formation is quite different. After that, you have to put a noun there, right? Then only it will become a possessive adjective. Definition, you can read it, it's the same thing. It's not necessary to know the definition, but sentence के हिसाब से, examples के हिसाब से, it is correct way of learning, क्योंकि उसी से आप समझ पाएंगे कि what the sentence is. देखिएगा, let me just read the definition here. The possessive adjectives show possession or belonging. It answers the question whose, किसका, that's what, whose, किसका पैर, whose paws did the dog lick? It licked its paws, उसी का paws, right? Oh, whose teachers did the students thank? The students thank their teachers. The same thing this way. Whose name is this? His name. Who is this? Whose is this? ठीक है, तो his name is John.
You can see a picture over here. आप उसको with that looking at that picture, you can frame a sentence there. Remember, ठीक है. उसके बाद it has to be a noun there. ऐसे आप लिख सकते हैं. An example: My car is green in color. Okay. और my car is shiny. ठीक है. मेरा कार बहुत चमक रहा है. ठीक है. My car. Right? That way. Those are known as possessive adjectives. Okay, great. I hope you have understood regarding all the previous ones and this one also, right? It's very simple. बहुत आसान होता है to frame the sentences. Just use these words, frame a random sentence. Whether it's right or wrong, you'll get to know. If it's wrong, it's fine. आप देख सकते हैं there. Okay. Now, just remember, एक ही चीज there. If you get a mistake in that, जस्ट ऑब्जर्व करिएगा द नाउन इज प्लूरल और सिंगुलर. अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करिएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करिएगा. दैट विल बी फाइन. मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वहाँ वो रूल अगर इफ यू फॉलो इट बिकम्स राइट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. ओके, नाउ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, लास्ट वन दिस इज. ओके, यहाँ पे ऑल द वर्ड्स जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क क्वेश्चंस व्हाट यू कॉल, दोज आर कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है. विच काइट do you want to buy? Whose car is that? Right. Which kite? Whose car? Okay. Which chocolate do you want to buy? Same sentence. मैं ऐसे what I'm trying to do is ऐसे you can change the subject and frame sentences. Which chocolate do you want to buy? Which chair do you want to buy? ठीक है. ऐसे you will have to change. अपने घर के आजू बाजू टॉप ये देखिएगा, सामान देखिएगा, एनीथिंग व्हाट यू कैन. ठीक है. यूज दैट इन दैट सेंटेंस, इन दैट सब्जेक्ट्स प्लेस एंड फ्रेम द सेंटेंस. दैट्स इट. जस्ट मेक 5 sentences ऑफ ईच वन ऑफ दीज. यही एग्जाम्पल्स जो है विद दैट जस्ट चेंज द सब्जेक्ट, कोई भी सामान ऐड कर दीजिएगा एंड फ्रेम 5 sentences दैट. ओके, आप समझ जाएंगे दैट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. ओके, यूज दिस वर्ड्स. ओके, yeah. So which, what, whose are used to ask questions. Interrogative adjectives with a noun, okay, to ask questions. वो हो जाता है. उसके बाद में always remember to put a noun also. What car do you want to buy? Right? कौन सा कार आप खरीदना चाहते हैं? What pen do you want to buy? Same. बस कार के place में I just put pen. What laptop do you like? What dish do you like? कौन सा dish आपको पसंद है? Right? That way. Just try to play with those sentences. इधर उधर play करने का try करिएगा. You will be able to learn it easily. Okay, yeah. So these were all the different adjectives, right? There were different types of words what we had to do. There is one more thing what I needed to tell you. ठीक है, इसके बाद now you have understood there are different types of adjectives. हर एक adjective का अलग अलग ये होता है, लाइक अलग वर्ड हो जाता है. बट फॉर द कॉमन वंस, जैसे इफ यू सी इंट्रोगेटिव का, तो यहाँ पे यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड्स रहते हैं वही हो जाता है. पोजेसिव का तो आप पोजेसिव प्रोनाउंस के जो वर्ड्स होते हैं, इट्स द सेम थिंग व्हाट वी आर यूजिंग टू फ्रेम द सेंटेंसेस. वही वर्ड से वी आर फ्रेमिंग सेंटेंसेस दैट. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव तो यू clearly know because we have also discussed that in pronouns, and it's clearly pointing out to something that this, that, these, those, जो भी आप point out करते हैं to a person or thing, indicate करते हैं, that is for demonstrative adjectives. Okay, now ये वाला number वाला adjective of number, it's the same thing what was there. It is about the number, exact number, and the sequence what it comes, the order what it comes. That is for adjective of number here, right? This is also simple. Now adjective of quantity. Now here there are some words what you'll have to remember. थोड़े words रहेंगे जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे. बट यहाँ पे one thing what you can remember is it's not definite. यहाँ पे numbers की तरह exact number नहीं है, it's a rough figure, right? पहला जो आ जाता है adjective of quality. यहाँ पे there are a lot of words what you have to see. मैं कुछ वर्ड्स आपको देता हूँ यहाँ पे. यू विल हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द प्रीफिक्स एंड सफिक्स दैट. ओके, आई होप मैंने बहुत बार प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में बात किया है, एंड इट इज द सेम थिंग. प्रीफिक्स एंड सफिक्स विल कम अगेन ओवर हियर. जनरली द सफिक्स
ठीक है, सफिक्स के कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे कॉमन सेंटेंस व्हाट वी से मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ठीक है, ब्यूटिफुल ये किसका हो जा रहा है? इट इज डिफाइनिंग द नाउन व्हाट इज द ड्रेस ओवर हियर, राइट। वो नाउन को डिफाइन कर रहा है हियर, ठीक है, और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है ये। ब्यूटिफुल, देखिएगा ब्यूटिफुल जो हो जाता है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। ब्यूटी, ब्यूटी प्लस फुल, ठीक है, ये वर्ड जो है व्हाट इज गेटिंग एडेड सफिक्स। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे, सफिक्सेस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल फुल, फुल के साथ तो वन एग्जाम्पल इज ओवर हियर ब्यूटिफुल। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज, ओके नॉट या ड्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, दैट इज फॉर ड्यूटी दैट्स फुल। ओके, श्याम इज अ ड्यूटीफुल वर्कर, राइट, दैट वे। सो आई हैव गिवन यू टू वर्ड्स हियर, मैंने दो शब्द ऐसे दिए हैं, आप लोग ट्राई टू फाइंड आउट टू मोर वर्ड्स रिगार्डिंग दीज। Okay, use internet, use dictionaries, use some books, newspapers, magazines, थोड़ा पढ़िए, रिसर्च करिए, find out some words। तो वर्ड्स आप लोग को आसानी से ढूंढ पाएंगे if you read a 2 minute small passage, वहाँ पे आपको बहुत सारे adjectives मिल जाएंगे। याद रखिएगा वही चीज़, noun के पहले आएगा using this के full के साथ, although you know, आप लोग जानते भी होंगे regarding full, there are some words, please do find that। A small homework from my side, okay, 2 words with full। Next one, OUS के साथ भी there are some words which can be framed, right? Like for example, the most common one, fame plus us, famous, right? One more word I'll tell you over here, adventurous, बहुत adventurous, famous तो बहुत सब लोग जानते हैं, what you call, many people know regarding you, that is known as famous, adventurous, adventurous, yeah, O won't be here, ROUS, adventurous, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना, बहुत कुछ देखना, that is known as adventurous, and doing some amazing activities, what is called adventure, adventure plus us, right, the same way। Try to find some words like this, ठीक है, 2 words for here also, okay, I know some words but I'll not tell, ठीक है, it will be good if you can read some and find, that will be great। okay, now let's move to the next one। okay, एक y के साथ आता है, with ends with y, this everybody knows, funny, right, funny is one word that way। another word what you can say is sketchy, ठीक है, sketchy, it's not clear, ठीक नहीं है, sketch ठीक से क्लियर नहीं है, sketch रफ ड्राफ्ट जो हम लोग बनाते हैं पेंटिंग में, what you do that rough draft, it's not clear but you can understand little bit। ये जब when you use this as an adjective, y के साथ आप जोड़ देते हैं तो ये adjectives बन जाते हैं। ये सब words जो अगर आप देखेंगे that is generally a noun or some other word, ठीक है, fame, ठीक है, एक अलग वर्ड है where you are adding something to get a pronoun, get an adjective there, ये सब add होते हैं for that। okay, after this one more word what I will give you which is with LESS, one word is very famous, what you know, right, shameless, shameless, it's a funny word, okay, shameless, okay, I'll just erase here thoda sa this way, shameless, what do you mean by shameless, ठीक है, shameless, ठीक है, जिसके पास शर्फ नहीं होता है, shameless, this way, shame plus less। okay, मैं इसका ज़्यादा words नहीं बताऊंगा, okay, I will not tell you more words regarding less, okay, if you can find out 2 words, so what you have to do is a small homework, 2 words from with a suffix of full, 2 words with OUS, 2 words with Y, and 2 words with LESS, right, please do find it। okay, this there are although many words this way, आगे IVE का भी आता है, you have to add IVE to get an adjective there, you can also add with ABLE, able, ठीक है, enjoyable,
ठीक है, डिपेंडेबल, दिस वे ऑल्सो आता है। देर आर मेनी वर्ड्स लाइक दिस, ठीक है। एंजॉयबल बहुत मस्ती वाला, ठीक है। डिपेंडेबल बहुत डिपेंड करने के लिए है। आई लाइक फॉर एग्जाम्पल ऋषि इज एन डिपेंडेबल पर्सन, बहुत डिपेंड कर सकते हैं आप उसके। आई वेंट टू एन एंजॉयबल प्लेस, बहुत एंजॉयबल प्लेस क्यों गया था मैं, राइट, दैट वे, राइट। देर आर सम वर्ड्स, देर आर सम सफिक्सेस व्हाट यू हैव टू नो, बट starting for now ये ठीक रहेगा for getting up with a simpler ones, right? चलिए, I have gotten small activity here for you, right? There are some sentences what you have to identify and there are some few of the fill in the blanks also. चलिए एक बार देखते हैं, let us see them. Okay, now here you need to underline the adjectives in the following sentences. You can also identify directly, आप यहाँ पे देख सकते हैं. You can just see this, read the sentences and know the words. Now I'll give you a moment, एक moment दूंगा. Just read them and pause the video and I will tell the answers after that. Okay, great. Let me read those sentences and accordingly I'll tell the answers. The climber did not eat any meals. Now, climber के बाद we do not know any adjective. वहाँ उसके पहले कोई word ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो climber को describe कर रहा है. But there is another word which is describing the meals over there. Right? Any. कुछ भी नहीं खाया. ठीक है? Nothing. But you can say that. That is what kind of an adjective that? Yes, exactly. That is an quantity. Quantity. Not quality, quantity. I do get confused with quantity and quality sometimes, but yeah, quantity here. There is a cold, next sentence, there is a cold wind blowing. कैसी हवा चल रही है? ठंडी हवा चल रही है. There's a cold wind blowing. There's a cold wind. ठीक है? Cold is what is defining the wind. Right, this way. ये सब ऐसे आप adjectives पता कर सकते हैं. Dark clouds hovered in the sky. Hovered मतलब it is I mean on the sky. उसके ऊपर से ऐसे जा रहा है. ठीक है? Hover मतलब generally हवा में उठ करके ऐसे जाना को hover कहा जाता है. वहाँ बीच में कोई ये नहीं रहता है. There is no nothing in between. वो ऐसे हवा में उड़ करके जा रहा है. कैसे बादल थे? How are the clouds? Dark clouds. Right, dark clouds. Right, this way. Right, ये dark हो जाता है. Dark is the adjective. Cold here is the adjective. Any is the adjective over here. Either book will do. Although either I have not told you regarding this. Either is another word which comes under emphasizing, right? Emphasizing this one. So either book will do. Although this is not required to know. This is not there. उतना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, to know this. But either will be one here. The adjective here. Okay, these eggs are rotten. These eggs, ये अंडे, right? These eggs are rotten. I have a few friends. कितने friends हैं? How many friends? Few friends. Okay, few friends. It is that adjective over here. He made several mistakes in the test. कितने mistakes किए? बहुत सारे mistakes किए. Several mistakes. What he has done. Several is an adjective there. 3 boys were walking down the narrow lane. यहाँ पे observe that there are some more adjectives over here also, right? 3 boys. Okay, it's the number. कैसा रोड था? कैसा लेन था? पतली गली थी. ठीक है, पतला रोड था. Narrow lane, what you can say, right? Okay, Ronaldo scored the 3rd goal of the match. Which goal did he score? 3rd goal. 3rd goal. 3rd is the number here. Right? The talkative girl got into a long argument. Talkative, बहुत बात करने वाली लड़की, बहुत बात करने वाले लोग. ठीक है? Talkative is an adjective here. It is defining the girl here. कैसा argument था? छोटा था, बड़ा था? It is a long argument. What was that? Right? This way. I hope you have understood regarding the adjectives here. Simple है. There are few what I have selected. One, there was few simple things what we did. Okay. Just try to read these sentences. इसमें आप लोग try to change those words. यहाँ पे ठीक है. The climber did not eat any meals. वहाँ पे आप you can write it. You can change that. The climber did ate a lot of meal.
बहुत सारा खाना खाया, ठीक है, a lot of meal, right? There's a cold wind blowing, there's a hot wind blowing, ऐसे बोल, there is no wind blowing, ऐसे भी कह सकते हैं, right? So this is how you can change sentences. Some might be an adjective, कुछ adjective हो सकता है, कुछ adjective नहीं भी होंगे, ठीक है, but do try to change those sentences according to the subjects there. That will be great. Okay, the last one, last activity what I have is regarding this. Okay, यहाँ पे आपको fill in the blank करना है, ठीक है, एक बार you read these sentences, will quickly complete with this. Okay, fill the blank using these adjectives. Now, dash prize went to Kavita, right? Dash prize went to Kavita. यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बता दिया है what kind of adjective you can place. Adjective of number आप यहाँ डाल सकते हैं, याद करिएगा कैसे आप बोल सकते हैं. You can use different words for adjective of number. याद करिएगा first, second, third, fourth, fifth. I'll put one funny word over here. Last. The last prize went to Kavita. Although it's not right to say this way, but I hope you understood regarding this ordinal numbers here. Right? This way. Suddenly a dash elephant blocked a path. Adjective of quantity. Right? One second. Okay. Yeah. Suddenly a dash elephant blocked a path. ठीक है, कैसा एलिफेंट, क्वालिटी है, ह्यूज एलिफेंट, बहुत बड़ा सा एलिफेंट ब्लॉक्ड पाथ, ह्यूज एलिफेंट ब्लॉक्ड आवर पाथ, राइट? डैश ऑरेंजेस आर स्वीट, डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पे रखा हुआ है, नजदीक है, ठीक है, दीज ऑरेंजेस आर स्वीट, दीज ऑरेंजेस आर स्वीट, यू शुड एडवाइज, you should revise the dash lesson. Okay, adjective of number here. You should revise the dash lesson. Number, ये भी same thing हो जाएगा there. First lesson, second lesson, third lesson, fourth lesson, that way, right? ये जो हो जाता है for number. I'll write fourth. You can pick any of your numbers there. ठीक है. Dash books did you buy at the book fair? Interrogative one. Try कर सकते हैं. Which word will you do? You can put many words here. Which book did you buy? Okay, which book did you buy? Injured man wants an appointment with dash doctor. कैसे डॉक्टर के पास आप जाना चाहेंगे अगर आपको चोट लगा? अच्छे डॉक्टर के पास, राइट? सो यू कैन जस्ट राइट हियर गुड डॉक्टर. Dash areas of the district were underwater. Dash areas in the district were underwater. कैसे areas पानी के अंदर डूबे हुए थे? जगह. Some districts, right? कुछ districts. Some areas of the districts are underwater. Take dash care of your health. ठीक है, take some care, take little care of your health. Little care, ठीक है, little care. Is there dash water in the jar? Some water in the jar. ठीक है, some water in the jar. Dash pen is mine. This pen is mine. This pen is mine. There are dash eggs in the bowl. Right? यहाँ पे you can put any number here. Okay, you can put like this 5 eggs in the bowl. That way also you can tell. Right? ये हो जाता है for all the adjectives here. Okay. These are all the simple sentences what we made. Little some sentences you might find it difficult, but I think it's easy ones. यहाँ पे कोई उतना difficult ये नहीं रहता. Remember, हम लोग जब parts of speech सीखते हैं, how did I learn parts of speech? मैंने क्या करता था कि यहाँ पे कोई भी sentence है ना, what I used to do is underline the things what are there in the sentence. Now for example यहाँ पे देखिएगा the last prize went to Kavita, right? The एक word होता है, ठीक है, it's an article. Last यहाँ पे adjective हो जाए, prize it's a noun, went it's a verb, to someone, ठीक है, Kavita it's a noun. Try, although मैंने आपको prepositions, conjunctions ये सब नहीं बताया है, but प्लीज जस्ट सेलेक्ट नाउन्स और जो प्रोनाउंस है, ऐसे रैंडम एक पेपर लीजिएगा, उसमें अंडरलाइन करके देखिएगा व्हाट इज अ नाउन एंड व्हाट इज अ प्रोनाउन दैट. लाइक ट्राई टू डू दैट वे यू कैन लर्न फ्यू थिंग्स. ओके, दैट विल बी इट फॉर टुडे एवरीवन. ठीक है, आज के लिए व्हाट वी हैव लर्न रिगार्डिंग फ्यू एडजेक्टिव्स. इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स इज वन मोर स्मॉल पार्ट नोन एज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, दैट व्हाट वी विल डिस्कस. दैट्स अ वेरी फनी टॉपिक. You will have to frame a lot of sentences. आपको बहुत sentences बनाने पड़ेंगे with that.
Okay, that will be it for today, everyone. I hope you have understood regarding those adjectives. Please do practice, please do frame sentences. That's what I can say. Keep a dictionary closer, because you might find some words difficult. You can use those dictionaries, I mean, to understand those words. That is one way I can tell you. But yes, do try to talk with everyone around you. Again, I'll say one small point again. There is another course what is going on, another session which is going on regarding the level 2, which another sir is taking up. Please do view that also. You never know, someday you might learn something new. Okay, please do that. Okay, thank you everyone. Please try to share this. Please try to share it with your friends and your family. These ones, it will really help us regarding the learning ones. I hope you have understood regarding the adjectives, and thank you everyone. We'll meet again in the next class. Thank you. Yeah, thank you everyone.